starts with fundamental theorem of arithmetic. Theorem of arithmetic. अब बच्चे तुम कहोगे ये क्या आ गया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. हम तो बात कर रहे थे रियल नंबर्स की, ये क्या आ गया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सब बातें साइड में छोड़ दो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 18. And I am doing the prime factorization of 18. We have already studied how to do the prime factorization of 18 in previous classes. How? First 2 9s are 18, then 3 3s are 9, then 3 1s are 3. Now 18 is equal to 2 into 3 into 3. So this is the prime factorization of 18. Clear? इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ये तो हम प्रीवियस क्लासेस में कर ही चुके हैं. तो ये हमारे पास क्या आ गई? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18. दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कैसे? ऐसे, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है. Why? Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number, composite means 18 is a composite number as this is having factor other than 100 itself. So every composite number can be expressed as product of primes. We are expressing 18 as the product of primes now. So this is a fundamental theorem of arithmetic which states that every composite number can be expressed as product of primes. Now every composite number can be expressed as product of prime and this prime factorization is unique. उसमें जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगी? यूनिक हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट अकर्स. ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा मींस 18 कैन also can be expressed as 3 into 3 into 2. Means order doesn't matter, but this prime factorization is unique. Unique in terms of numbers, not in terms of order. So